Is my screen visible to you all guys? No, right? So once we have made that web project, server, we know how to start the server. Okay, properties, project facets also we know how to do. Okay, right click, properties, project facets, and 4.0, 1.8, 1.0, run times, Apache 9, apply and close. This much is done. This also has been done. JDK version all has all set. Okay, now what we will be needing is some file will be needing web XML and the dispatcher servlet. So you can go to this of my repository, one of my repositories. Okay, and we have downloaded these two jars, right? Okay, and just take these two files also. The Spring MVC demo servlet. Download that. Okay, download these two. So click on this and download, and web XML, and click on that and download. And these two you all already have, part 1 and part 2, correct? So now let's start. Download the web XML Spring core. Done. Third, the Spring libs which you already had, right? Now what to do? Copy the web XML and the Spring MVC demo into the which folder? Web INF folder. So if we see, it is in the downloads, right? So copy these two, remove, copy to a separate location, remove this two from there, remove the two from there. Okay, I'll just paste it over here and remove this number 2. Copy these two, put it where? In the SRC main web app, and then where? Web INF, where the web XML is there. Done. Paste it, and paste these two jar files where? In the lib, right? Where did we paste the jar file? Extract the Spring and paste all the jars in the lib folder. So we had extracted that, right, last time around. Where? D G L, when you are doing Spring core. Yeah, right, part 1, Control A, Control C, and add it to the lib, Control V, and part 2 also, Control A, Control C, and paste it. Part 2 also. Okay, added. This step is done. I downloaded all these 4, copy pasted the web XML and the Spring MVC demo XML in the web INF folder, and pasted all the jars in the lib. Okay, now make a, in the SRC main Java, where? Make a package by the name controller. So where is that? Here, Java resources, SRC main, right click, make a new package. By what name? home.itp.controller, and also make a new package by the name home.itp.model. Okay, now it is not showing in, see they are in the same parent but showing at 2 different alignments. Just go to the application and refresh it, right click and
Let's refresh to show you the proper alignment. Okay, so done. And make a class by the name, what name? Hello controller. So right click, new class, by what name? Hello controller. First we'll start with simple @rest controller. I'll show you simple. So @rest, you can just do a control S, control space bar, rest. You see rest controller? Just made rest controller. Now configure the dispatcher servlet. So once we have copied them in the web INF, okay. So web INF, this web XML tells you which is, see, what is this, what these two files are doing is, web XML, you know, does the routing work. Now who will do the routing work? Now controller. So what happens is, when I say SpringMVC, so whatever I will return, so in SpringMVC we will use controller. Okay, let's take example of controller. So let's not go to REST controller. What will we use in SpringMVC? Controller means what will we return? Web page. So whatever I will return, so let me make a function over here, public. So it will return you a string always. What will it return? So what will this return? So if this returns, what does this mean? This means that Shivam is a HTML page. So I will just return the name of the page. I will just return the name of the page. What is prefix? What is suffix? What is prefix? What is suffix? हाँ, प्रीफिक्स जो पहले लगता है और सफिक्स जो बाद में. कंट्रोलर सिर्फ क्या रिटर्न करता है? पेज का नाम. ये पेज किधर है? ये पेज हमारा रहेगा वेब ऐप के अंदर, ठीक है, वेब INF के अंदर एक व्यूज फोल्डर में. किसमें? एक नया फोल्डर बनाया, क्या नाम से? ये सारे व्यूज रहेंगे ना इसके अंदर. तो व्यूज के अंदर एक नया HTML फाइल है. किस नाम से? shivam.h. तो फाइल का नाम क्या है? वेलकम टू. तो फाइल का पूरा नाम, पूरा पाथ क्या है? वेब INF /views /shivam.html. तो पूरा क्या है पाथ इसका? web-inf /views, है ना. तो ये जो व्यू है वो फंक्शन है कंट्रोलर का. वो सिर्फ क्या रिटर्न कर रहा है? सिर्फ क्या रिटर्न कर रहा है? बीच का पार्ट कर रहा है. उसके पहले क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, यानी प्रीफिक्स क्या है, और वो कौन कर रहा है? वो ये कर रहा है, SpringMVC कॉन्फ़िगर कर रहा है. तो वेब XML क्या कर रहा है? ये सारे कॉन्फ़िगरेशन कौन से फाइल में बता रहा है. ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है, प्रीफिक्स क्या लगाना है, सफिक्स क्या लगाना है, कौन से फाइल में है. वेब XML से उस फाइल का नाम बता रहा है. तो वो कौन से फाइल में है वो बता रहा है. वेब INF के किसके? SpringMVC demo server.xml. तो ये वाली फाइल है. अगर मैं यहाँ पर लिख दूं apple.xml में है, किसमें है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा. क्या नाम? apple.xml. तो SpringMV web.xml क्या कर रहा है? सिर्फ उस फाइल का नाम बता रहा है. उसको बोलते हैं डिस्पैचर सर्वलेट. क्या बोलते हैं इसको? अब उस फाइल में गए, वो फाइल बता रहा है कि आपका कंट्रोलर कौन से पैकेज में होगा. कौन से पैकेज में होगा? com डॉट कंट्रोलर कौन से पैकेज में है? com.itp.controller. और आपका जो व्यूज है उसका प्रीफिक्स क्या होगा? /web-inf/view. अपने इसमें क्या है?
व्यूज क्या करना पड़ेगा इधर है। और एंड क्या है आपने इसका सफिक्स, आप इसमें क्या दिखा रहा है जेएसपी, तो क्या करना पड़ेगा अपने को उसमें। अरे बात समझ में आ रही है, क्या करता है तो वेब एक्सएमएल सिर्फ बताता है कि डिस्पैचर सर्वलेट किधर है, बोलता है वो इस लोकेशन पे है। डिस्पैचर सर्वलेट बोलेगा कि कौन सा कंट्रोलर है पैकेज और कौन से व्यूज के सफिक्स क्या है प्रीफिक्स क्या है। अब मैंने यहां पर सिर्फ क्या